Hello everyone, how are you all? I hope all are you doing absolutely great and amazing and you all are stay at home. So our today's discussion topic will be radioactivity. And in this lecture we will talk about that what is radioactivity and why some elements are radioactive. So first question that we can see, that is what is radioactivity? Radioactivity क्या है? And next is why some elements are radioactive. Okay, to knowing this answer we will know some points. Among 1500 nuclei there are only 260 nuclei are stable. What do you mean by this? 1500 nuclei, 1500 known nuclei, 1500 known nuclei के अंदर ओनली 260 न्यूक्लियाई क्या है? स्टेबल है. Among 1500 known nuclei there have only 260 nuclei are stable and others are unstable. बाकी सारे न्यूक्लियाई जो है they are and others are unstable. बाकी सारे जो है वो क्या है? अनस्टेबल है. 1500 न्यूक्लियाई के अंदर 260 न्यूक्लियाई स्टेबल है और बाकी क्या है? अनस्टेबल है. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. द अनस्टेबल nuclei gain stability. How a unstable nuclei gain his stability? To emit the what? Alpha particle, beta particle and gamma electromagnetic wave So how a unstable nuclei gain stability? That to emit, they can emit alpha particle or beta particle and gamma electromagnetic wave. If a nuclei emit alpha particle, so this nuclei can only emit alpha particle, they cannot emit beta particle. But this nuclei can also emit the gamma electromagnetic wave. Okay, this is a small note. Okay, so this is the first point and this is the second point. The first point says that we can repeat that among 1500 known nuclei there are only 260 nuclei are stable and others are unstable. And unstable nuclei only they can produce, the unstable nuclei can produce alpha particle or beta particle and gamma electromagnetic wave that I have already right here. The unstable nuclei gain stability to emit the alpha particle
alpha particle or beta particle and gamma electromagnetic wave. So we will repeat this. Among 1500 known nuclei, there have only 260 nuclei are stable and other nuclei are unstable, and the unstable nuclei gain his stability to emit the alpha particle. How unstable nuclei gain stability, that I have already told, that they can emit alpha particle or beta particle and gamma electromagnetic wave. Now let's move on to the third point, that radioactivity is a nuclear phenomena. Wait, that radioactivity, in the third point we can know that radioactivity is a radioactivity is a nuclear phenomena. The rate of emission of, I will write here, yes, the rate of emission of alpha particle, beta particle and gamma is not a particle, this is electromagnetic wave. Gamma is magnetic wave. The rate of emission of alpha particle, beta particle and the gamma electromagnetic wave depends on the what? They can depends, the alpha particle, the rate of emission of alpha particle, beta particle and gamma electromagnetic wave will be depends only on the concentration of the nuclei. Okay, they means alpha particle, beta particle and gamma electromagnetic wave, they not depends on the heat, temperature, pressure and other they not depends on the temperature, pressure and other physical conditions. Okay, what I will write here, other physical condition. Okay, radioactivity is a nuclear phenomena. It is a nuclear phenomena. Okay, the rate of emission of alpha particle, beta particle and gamma electromagnetic wave will be depends on to the concentration of the nuclei, and they not depends on the temperature, pressure and other physical conditions. This is our third point. Okay, I hope the 3 points are clear. Now let's move on to the point number 4. What the point number 4 says, that is radioactivity was first discovered. Radioactivity was first discovered. The radioactivity was first discovered means कब radioactivity first पहली बार डिस्कवर हुआ था, in the year of 1896
1896 by Henry Becquerel. By Henry Henry by Henry Becquerel. Radioactivity was first discovered in the year of 1896 by Henry Becquerel, and that is an accident. Okay, that is an accident. By accident the radioactivity will be discovered. Is it possible? No. That to research one thing, there have lots of way to research this. So this is, we will write here accident and accident, but this is not an accident, that he will be taking a atom of uranium. He will be taking atom of uranium and he will be coated black paper on it. Then he will be take a silver foil, and then he will be take a photographical plate, that is a photographical plate. So in this experiment he will be see that the photographical plate has some of black spots. So here he will be discover about the radioactivity. यहाँ पे कौन सा पार्टिकल एमिशन हुआ था? दैट इज अल्फा पार्टिकल. ओके, सो दैट इज द डिस्कवरी ऑफ रेडियोएक्टिविटी. ओके, आई होप इतना तक आपका जो चारों पॉइंट मैंने बोला आपको क्लियर है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सम एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव. ओके, okay, let's draw a graph. Number of, if we will take sodium Na, that is 1123, means 11 protons and 12 neutrons, that is closer than 1, that is closer to 1. Okay, closer to 1. So what I will say, if the number of neutron is greater than the number of protons, that is radioactive, means that is the unstable, and if the number of protons is greater than number of neutrons, that is also unstable. Okay, now let's move to the atomic number, that is 20 to 100. 20 to 100. The ratio of N by P, the ratio I will write here, the ratio of N by P is greater than 1 and smaller than 1.6. Greater than 1 and smaller than 1.6. Okay, so what you can say, that this, if I will draw the straight line to it, and this is 1.6, the number of protons will be same, but the number of neutrons are gained to 20, atomic number 20 to 100 and all. Okay, so we can see this. Okay, type of this type of graph we can see to 20 to 100.
This is the point that is 83. The atomic number 83. The number of protons 83. That is the last point of stable nuclei. Okay, that is the last point. If the number of protons are greater than number of neutrons, then that is radioactive, and same thing, the number of protons is less than number of neutrons, means number of neutrons are greater than number of protons. This nuclei are unstable. And 83 के बाद न्यूक्लियाई, मतलब 83 इज द स्टेबल न्यूक्लियाई, 83 तक स्टेबल न्यूक्लियाई, उसके बाद जितने भी है सब अनस्टेबल न्यूक्लियाई, सभी रेडियो एक्टिव। इसलिए हमें पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाया जाता है तब बोला जाता है नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब देखो यहाँ पे n/p का रेशियो 1.6 क्यों हुआ, यहाँ पे प्रोटोन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बड़ा किस लिए। ओके, यहाँ पे थोड़ा एक चीज काम आता है, रुको इसको मैं मिटा लूं पहले। ओके, अब देखते हैं, चलो एक एटम, दैट आई विल ड्रॉ ए न्यूक्लियस हियर, आई विल ड्रॉ ए न्यूक्लियाई। यहाँ पे मैंने रखा एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन। ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दोनों को रिपल करेंगे, किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बियन फोर्स के लिए दोनों रिपल करेंगे ईच अदर, करेंगे। अब अगर इसको रिपल करेंगे तो न्यूक्लियाई क्या स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा। देखो पहले ये तो प्रोटॉन निकल के चला जाएगा, दोनों के बीच में गैप बढ़ जाएगा, बिकॉज रिपल करेंगे दोनों, रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों के, रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों के बीच। इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, देखो ये लगता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, मतलब ये इन दोनों के बीच लगता है, इन दोनों के बीच लगता है, इन दोनों के बीच लगता है, इन दोनों के बीच भी लगता है। ठीक है, तो ये बना दिया स्टेबल न्यूक्लियाई। ये क्या हो गया, एक स्टेबल न्यूक्लियाई। अब क्या होगा फॉर द स्टेबल न्यूक्लियाई, ये तो स्टेबल न्यूक्लियाई हो गए जहां पे जो फोर्स, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक किससे कम है, न्यूक्लियर फोर्स से, इसलिए वो स्टेबल हो गया। अगर बढ़ गया ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर बढ़ गया तो वो न्यूक्लियर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जो न्यूक्लियर ड्रॉ किया है ये एक स्टेबल न्यूक्लियर है, स्टेबल न्यूक्लियर। ओके, सो दिस इज अ स्टेबल न्यूक्लियर। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी एंड व्हाई सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। आई होप ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर है। आई होप इज इट क्लियर, इफ इज इट क्लियर देन थैंक यू, bye bye, see you, take care yourself and stay motivated. If you are liking this video then please share to friends and don't forget to subscribe to the channel. In this next video we will talk about the emission of and the decay of alpha particle, beta particle and gamma electromagnetic wave, and we know that and we discuss about the why I will say is gamma is electromagnetic wave. Okay, thank you, bye bye.